अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जेन ऑस्टन आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन। जेन ऑस्टन वाज अ वेल नोन नॉवेलिस्ट एंड अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द विक्टोरियन एज। शी वाज बेस्ट नोन फॉर हर 6 मेजर novels. हर स्टोरीज ऑफन एक्सप्लोर द नीड फॉर वुमेन। अच्छा, ये वाला जो पेज है ना, ये ऑब्वियसली मुझे भी लग रहा है कि ये ब्लर है। ठीक है, जो चीज़ ब्लर होती है वो मैं आपको बता देती हूँ। अब आपने मेरे वर्ड्स पे फोकस करना है, जो जो मैं कह रही हूँ। ठीक है, जेन ऑस्टन स्टोरीज ऑफन एक्सप्लोर द नीड फॉर वुमेन टू गेट मैरिड टू प्रमोट ह्यूमन सोशल एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी। ठीक है, ये सिक्योरिटी लिखा हुआ है। प्राइड एंड प्रेजुडिस इज द नावल अबाउट मैनर। प्राइड एंड प्रेजुडिस स्पेसिफिकली फोकस ऑन द सोशल सेटिंग ऑफ द इंग्लिश अरिस्टोक्रेसी इन द 19th century। जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे वैसे लिख लें, रफ पे लिख लें, फिर आपको उसको समझ के 2-3 बार पढ़ के फिर आप लोग अपने नीट रजिस्टर पे उतार लीजिएगा। This novel is a true representation of that modern society that differentiates social class, the need for fame, the necessity for marriage, and the dual face of the society. She also represents women as being weak in those days because they were uneducated and pop and properly. This was a particular point that Austen wanted to make. Austen never repeats her character. In her 6 books, she never repeats a single character on every her work. The main protagonist of her work is almost a heroine who, after many understanding and misfortunes, eventually meets the right man to whom she gets married. Marriages, dinners, dance parties, and adventures are the most familiar ingredients of her stories. Her major method of showing the flaws of her characters are humor and irony. Austen's female characterization. Jane Austen is a female writer, seems to the heart of her novel, like Emma, Pride and Prejudice, and Sense of Sensibility. To understand completely the female character in a Jane Austen work, it is also important to know about the society in which she was living. ये मुझे पता है कि ये चीज़ बुला रहा है, तो इसलिए मैं आपको वाज़ेह तौर पे समझा रही हूँ। ठीक है, आप लोग इसको पहले रफ पे उतारें, 2-3 बार पढ़ें, फिर नीट कर लीजिएगा। वुमेन ऑफ हर टाइम कुडंट गेट एन एजुकेशन इन हायर इंस्टीट्यूशन। जेन ऑस्टन के टाइम में वुमेन्स को इतनी एजुकेशन नहीं मिलती थी कि वो कभी हायर स्कूल में जाके एजुकेशन हासिल कर सके, लाइक ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज। जेन ऑस्टन गॉट मोस्ट ऑफ हर एजुकेशन एट होम। उसने अपने घर में काफ़ी ज़्यादा एजुकेशन हासिल की फ्रॉम हर फादर, अपने बाबा से। वुमेन ऑफ सच सोशल स्टैंडिंग कुडंट गो आउट फॉर अ जॉब, इवन कि वो जॉब्स के लिए भी बाहर जाके जॉब्स नहीं कर सकती थी, एंड सपोर्ट देयर फैमिलीज। दैट इज़ वाई ऑस्टन मेन focus is on a woman of her society. Austen's characters are never repeated. Austen never repeated her character. The character Mr. Collins of Pride and Prejudice and the Allens in Emma are similar. They are both arrogant, yet Austen presented them in a completely different way. Similarly, the vulgarity of Mr. Bennet in different form of the vulgarity of Sense and Sensibility. Comparison of characters in Jane Austen novel. Jane Austen also presented her character by a way of comparison and contrast. For example, Mrs. Bennet and Lady Catherine are differently from each other in the same way Darcy and Wickham's too. Flat and round character अब क्या होते हैं? Jane Austen main character are round and at the same time her minor characters are flat. Flat characters are those characters that don't have complexity. For example, Mrs. Bennet of Pride and Prejudice. Mrs. Bennet remains dull, vulgar from the beginning of the end. सेम रही हैं शुरू से लेके एंड तक, तो इन जैसे करेक्टर्स को कहते हैं फ्लैट करेक्टर. ऑन दी अदर हैंड, राउंड करेक्टर आर दोज करेक्टर दैट चेंज एंड डेवलप ओवर द टाइम इन द स्टोरी. फॉर एग्जाम्पल, एलिजाबेथ एंड डार्सी, पहले इनके व्यूज़ कुछ और थे शुरू में और एंड पे कुछ और हो जाते हैं, फिर उनकी शादी हो जाती है. जेन आल्सो हैज़ अ सच a character who goes through an emotional turn in the novel. Conclusion: Jane Austen's characterization didn't have only positive features, but her art of characterization also had a few shortcomings. So we can conclude by saying that her characters are intentionally planned and properly built. So I'm done this video. कहीं पे किसी चीज़ की समझ नहीं आई, without any hesitation आप लोगों ने पूछ लेना है. मेरे इस चैनल पे आपको नोट्स ही नोट्स मिलेंगे. So thank you.